discount. 2850 is after discount. Is that clear? So basically entry क्या बनेगा आपका? Nishant, what entry you will pass? Purchase account. Okay. Purchase account to bank account to discount received account. Okay. Purchase to bank to discount received. Okay. So purchase to bank and purchase to discount. The purchase to bank will go in your cash book. The cash book, what will you write? Buy purchase in the bank column 2850. Buy purchase in the bank column 2850. And what about purchase to discount? Purchase to discount, I think, should go in a note. Transaction on second involves discount received, which will be recorded in JP. Okay. Transaction on first involves discount received, which will be recorded in journal proper. Second, transaction on second involves discount received. Purchase to bank, purchase to discount. Got that? See the next one. Received a check on account from Himal for 3250 in settlement of 3,300. Received a check of 3250 from Himal in settlement of 3,300. Maya, what do you think? What should be the entry? Bank discount to Himal. It seems like it should be bank discount to Himal, but is that right? The next transaction. It's cash. Like right now it's cash, then it's bank. Exactly. देखो चेक कभी भी रिसीव कर रहे हो ना नॉर्मल चेक तो स्टोरी पढ़ लेने का नीचे कुछ ना कुछ सपोज दिया है तो you have to treat that check like cash. If that check is deposited on some other day or if that check is endorsed to someone, then you have to write it as cash right now. Okay. So what is happening on the very next day? What is happening in the very next transaction? Deposited the above check with bank. Got it? So right now, how will you treat that check? Will you treat that check as cash or bank? What do you think? Cash. अभी इसको कैश ट्रीट करना है. ईशा को समझ रहा है? ये देखो सेम डे डिपॉजिट नहीं हो रहा है. So you won't write bank to Himal. You will write cash to Himal as of now. Okay. So cash discount allowed to Himal. So cash to Himal and discount to Himal. So पहले जाओ cash to Himal. To Himal account cash column 3250. To Himal account cash column 3250. This is check received. Short में चाहिए तो लिख लो. Check received and discount to Himal. Discount to Himal will go in your cash book. Transaction on 5th involves discount allowed, which will be recorded in JP. Which will be recorded in JP, journal proper. Do you all get that? समझा सबको? Next one. Received a check के बाद दिया है 6 को. Deposited the above check with the bank. Deposited the above check with the bank. Now what entry will pass, Kashish? What do you think? Bank to cash. Bank to cash. Now it will be a contra entry. Okay. Now it will be a contra entry. And how will you post that, Kashish? Bank to cash? On the debit side to cash account, the bank column 3250. Perfect. And we write C there. C And there. bank account 3250 on the cash column. Barabar. And again a small c for contra. Okay.
ब्रैकेट में चाहिए तो लिख दो चेक डिपॉजिटेड, शॉर्ट में लिख दो चेक डिपॉजिटेड, दिस इज ऑन 6th. तो बैंक टू कैश for that is a contra entry for depositing check. You treat that check as cash, and then when you deposit you write bank to cash, okay, because that check is like cash in our books. That check is like cash in our books. चेक आया है लेकिन हमने कैश को ही डेबिट किया, कैश अकाउंट के जैसा रखा. 8th वाला क्या दिया हुआ है, इश्यूड द फॉलोइंग चेक्स. यहाँ पे ही क्लिक होना चाहिए. इश्यूड द फॉलोइंग चेक्स मींस व्हाट? आर यू रिसीविंग और आर यू पेइंग? Paying. You are paying, Expenses. right? Expenses हो सकता है या payments हो सकता है, okay? Expenses हो सकता है या payments हो सकता है. Let's check it out. First one, 125 for interest on loan borrowed. That gives you a hint. What is your interest on loan borrowed? Is it your expense or income? Interest on loan borrowed is an expense. आपने loan borrow किया है, उस पे आप interest pay करोगे. So Priyal, what should be the entry? Interest on loan to bank. Perfect. So how will you write here? By Interest on loan account and in bank column 125. Perfect. By interest on loan account, bank column 125. Okay. By interest on loan, bank column 125. Then the second one, another check has been issued of 2000 to Shamal, a creditor, in full settlement of 2200. Shamal, a creditor, in full settlement of 2200. Preet, what do you think? Entry क्या होना चाहिए? Shamal, discount allowed to bank. शामल टू बैंक बराबर है, डिस्काउंट अलाउड होगा कि रिसीव्ड होगा? Received. Whenever you pay, you receive discount. Whenever you receive, you allow discount. So entry क्या करोगे यहाँ पे? By what? By Shamal. By Shamal. By Shamal account, and how much? 2000 या 2200? 2000 rupees. Okay. In which column? Bank column. In the bank column, 2000 rupees, because there are two entries. Hope all of you got that. शामल टू बैंक एंड शामल टू डिस्काउंट. समझ में आया? तो शामल टू बैंक किधर जाएगा, शामल टू डिस्काउंट किधर जाएगा? तो इन योर जर्नल प्रॉपर नोट, ट्रांजैक्शन ऑन 8th involves discount received, which will be recorded in journal proper. Transaction involves discount received. Transaction involves discount received. That will go in journal proper. Is that clear? Comfortable, all of you? Next one we have is 250 rupees for inserting an advertisement in Indian Express. Poojan, what do you think? What should be the entry for that? Yes, sir. Entry 250 for inserting an advertisement in Indian Express. Unmute. Unmute. Advertisement to bank. Perfect. तो इधर क्या लिखना है कैश बुक में? By advertisement. By advertisement account. By advertisement account in the bank column 250 rupees. By advertisement account in the bank column 250. That is advertisement expense paid. Next one, 750 rupees to Khaitan India Limited for fan purchased for office use. Jia Savla. What should be the entry for this? Fan purchased for office use. By Khaitan. By Khaitan. Is that right? By fittings account. By fittings. Why by fittings? Why not by Khaitan? Acha, sorry, it is for office use now. So what? So Why not by Khaitan and why by fittings? I don't know.
It is immediately bought and the money is paid. Okay, asset is purchased and immediately you are paying. So it is a cash purchase of asset. What is the entry when you buy assets for cash? It is asset account debit to cash account. It is asset to cash account. Is that clear? तो यहाँ पे asset to bank. बाय खैतान कब आता अगर आपने फैन क्रेडिट पे खरीदा होता एक आध महीने पहले 15 दिन पहले और अब आप पेमेंट कर रहे हो तो इट वुड हैव बीन बाय खैतान. ओके, सो इमीडिएट पेमेंट है तो एसेट टू बैंक. बाय फिटिंग्स अकाउंट, फिटिंग्स टू बैंक इज द एंट्री, तो बाय फिटिंग्स अकाउंट बैंक कॉलम 750. बाय फिटिंग्स बैंक कॉलम 750. इज दैट क्लियर? So all the 4 checks were issued. Issued मतलब पैसा दिया था मतलब payment side. Okay. Next one, 9th one. The bank informed us that the check deposited on 6th September 86 नहीं है 2016 it is. The bank informed that check deposited on 6th September 2016 returned dishonored. Veer, क्या होना चाहिए entry? So it will be by Himal account in the credit side. Yes, by Himal account. 50, and then there will be a note. Which column? Bank. Bank column. Perfect. Why did we write it in bank column? Because check is already deposited. Got this? Opposite side party's name. So Hemal wala check tha. Opposite side to buy. Okay. Party's name Hemal. Reverse the discount and same column. What about reversal of discount? Yes. Yeah, you write that in a note. Note. On 9th involves reversal of discount allowed, which will be recorded in journal. Absolutely right. यहाँ पे क्या mention करना important है? Reversal. Transaction on 9th involves reversal of discount allowed. Okay. Reversal of discount allowed, which will go in journal proper, which will be recorded in journal proper. Reversal of discount allowed. Okay. Reversal of discount allowed का मतलब जब चेक आया था तभी बैंक डिस्काउंट टू हेमल पास किया था, कैश डिस्काउंट टू हेमल था, फिर डिपॉजिट किया तो डिसऑनर हो गया तो डिस्काउंट भी उल्टा हो जाएगा. डिस्काउंट अलाउड वुड बी क्रेडिटेड. ओके, पैसा आया तो डिस्काउंट अलाउ गया ना, अभी बाउंस हो गया तो क्या का डिस्काउंट. सो रिवर्स दैट. गॉट दैट? फोर्थ वन. देन नेक्स्ट वन वी हैव इज 10th. देखो अभी हेमल का क्या सीन था. हेमल ने अपने को चेक दिया, हमने वो चेक डिपॉजिट किया, अब वो चेक बाउंस हो गया. Now what is the situation with Hemal? Are we supposed to receive money from her or are we supposed to pay her? What do you think? Receive. Are we supposed to receive money from her or pay to her? Receive money from her. How much are we supposed to receive from her? 3250. How much are we supposed to receive? Think. 3300. 3,300. Okay, 3,300. क्यों 3,300? सोचो, उसने पहले पैसा दिया इसलिए हमने डिस्काउंट अलाउ किया, अब चेक तो बाउंस हो गया तो काय का डिस्काउंट. अभी तो पूरा 3,300 लेना बाकी है, यही पकड़ के चलना है. ओके, नाउ रीड दैट ट्रांजैक्शन. 10th one. Hemal paid cash for the amount due and retained the benefit of discount. Retained the benefit of discount मतलब क्या हमने वापस डिस्काउंट अलाउ किया उसको कि नहीं किया? What do you think? Yes, we allowed her discount again. No, We allowed her a discount again. हम बड़े ही दिल के अच्छे हैं, हम हरिश्चंद्र हैं, हमें गुस्सा नहीं आता. ठीक है. This is just for saying maybe she would have paid the amount immediately, so that is within the time period. Basically, practically she is within the time period of discount, so that's why we are allowing discount. अगर उसने डिले कर लिया होता ना ज्यादा तो हम डिस्काउंट अलाउ नहीं करते. Yeah. But sir, if the check was dishonored, we would have to pay some some amount to the bank. So What happens why is would we allow? those charges they are paid by the person who dishonors the check normally. Okay. So जिसके खाते में जाता है उसको नहीं, वो अभी थोड़े बहुत बैंक्स ने किया है, but we have to recover it basically. So ultimately fault किसका है? जिसने bounce किया है check. So those charges and all are paid by the person who bounces the check. Okay. Okay, thank you. So yeah, over here what is happening? अगर सिर्फ इतना दिया होता, हेमल paid us the necessary amount.
Hemal paid us the necessary amount. Palak, so how much you would have received? Hemal paid us the necessary amount, so how much you would have collected? $3300. 3300. Okay. Hemal paid us the necessary amount दिया होता तो you would have collected 3300. But यहाँ पे दिया है retaining the benefit of discount. मतलब वापस we allowed her a discount. So entry होगा cash to Hemal. So to Hemal account cash column 3250. And वापस we allowed her a discount. वापस we allowed her a discount. तो नीचे जाएगा note number 5 transaction on 10th involves discount allowed which will be recorded in JP. समझ में आई बात? हेमल का कहानी क्लियर है सबको? स्मिथ शाह, पहले you received a check, then the check got deposited, then it got bounced, and then again she paid us the money, and again we allowed her a discount. Okay, we are Harish Chandra, we are very good at heart, so we allow discount, we keep allowing discounts. Okay, So so what if Hemal hadn't paid us cash on the spot? on the spot नहीं, वो transaction देख के दिया होगा. Hemal paid retaining benefit of discount, या सिर्फ ऐसा दिया होगा Hemal paid us the necessary amount. Hemal paid us the necessary amount मतलब no discount, 3,300. No, but if she hadn't paid check amount on 10th, so how would the entry be in the discount? Does not matter whether it is 10th or 15th or 20th. Does not matter. They'll give you in the transaction clear cut whether a discount is allowed or not. If nothing is specified, if she's paying the amount directly, ऐसा दिया है, Hemal paid us the necessary amount. Whether on 10, 12, 15, 18, whatever. Hemal paid us the necessary amount. That means she will pay us 3,300. Only if they specify that discount is allowed, retaining the benefit of discount with discount, तो फिर will take discount. Otherwise, no discount. एक बार check dishonor हो गया तो फिर generally there is no discount. Okay. So if nothing is specified, then no discount. पूरा पैसा ले लेंगे. Next one, 15. Sold goods to Premal at 10% TD, 5% CD, and received a check of 3420. Ria Gandhi, what do you think is the amount of 3420 after discount or before discount? After discount. Very good. Check received is always after discount. What entry you will pass now on 15th? Can you tell me? Just a second. To sales account. Very good. To sales account. Which column? Bank column. Are you sure? But sir, in the next entry, I guess we are endorsing it. So it will be in cash column. Very good. See, ऐसा नजर जाना चाहिए. You have to check the next entries for check. जैसे वो हेमल वाले केस में हमने किसी और डेट पे डिपॉजिट किया था, जैसे ये ही चेक है, प्रेमल वाला जो चेक है, क्या हो रहा है? पढ़ो नीचे क्या हो रहा है. You are getting it endorsed. You are endorsing it. Endorsement का मतलब समझ में आया कुछ? Endorsement याद आया? Cash. हाँ, endorsed is always cash क्योंकि आया हुआ चेक किसी और को फॉरवर्ड कर दिया. So endorsed check will never reach our bank account. So can I debit bank for that? Can I debit bank for that? कंसेप्ट क्या है? अगर बैंक पे पैसा जा रहा है तो आप डेबिट करो, बैंक तक पहुंचा ही नहीं है तो why to debit bank? So to sales, absolutely right, but which column, Ria? Cash column. Absolutely right, cash column. And also there is Note. some discount. Yeah, so note में जाएगा. What will be your note number 6? Transaction on 15th involves discount allowed, which will be recorded in JP. correct. Same as above, fifth वाला और sixth वाला note dicto same है. Transaction on 15th involves discount allowed, hence it will be recorded in journal proper. Is this part clear? All of you got that? समझा सबको? Now, coming to the next one, this is check received. Short में लिख देता हूं मैं यहाँ पे check received. This was check dishonored. Himal wala check dishonored.
डिसऑनर हुआ था on 9th. Now 15th को प्रेमल का चेक आया, ठीक है। 16th को 15th को प्रेमल का चेक आया, 5% CD था। अच्छा, अगर आपको पूछा जाए CD अमाउंट, सपोज, वुड यू बी एबल टू कैलकुलेट दैट CD अमाउंट 5%? 180 rupees. 180. You know that, right? Amount before CD minus CD, amount after CD equation. Or you can simply take the nearest round figure on the higher side. तो पहले 3500 डाल के देखो, फिट नहीं हो रहा है तो 3600 डाल के देखो, that is fitting. 3600 का 5%, that is 180. Got it? चाहिए नहीं अपने को। नेक्स्ट वाला देखो अभी, 18th one. Endorsed Premal's check to Komal in full settlement of her account of 3,500. Nishi, what should be the entry for that? Endorsed Premal's check to Komal in full settlement of her account of 3,500. Komal to discount allowed to bank. Komal to... Sorry, Komal discount allowed to bank. Whenever you are paying, will you allow discount or will you receive discount? Receive discount. It is discount received. So Komal to discount received to what? Cash. It's not bank. See, remember this. In your dreams also remember this. Endorsed check is cash, 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 cash. Endorsed check is cash. Endorsed check is always cash. Endorsed check will never look the face of the bank. Never, never, ever. Endorsed check में कभी भी बैंक नहीं आएगा। आया हुआ चेक हमने फॉरवर्ड किया हुआ है, तो is the money going from our bank account? Imagine. Imagination is very important here. You are receiving a check from Premal and you are giving the same check to Komal. तो पहला चेक आया तभी कैश टू सेल्स, क्योंकि सेल्स का था। अब वो चेक जा रहा है कोमल को, तो व्हाट एंट्री शुड यू पास? कोमल टू बैंक या कोमल टू कैश? बोलो। Cash, because we haven't gone to the bank only for तो deposit. बैंक तक पहुंचेगा ही नहीं, तो एंडोर्स चेक इज ऑलवेज कैश। तो कोमल टू कैश टू व्हाट? डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड? Discount. डिस्काउंट रिसीव्ड। कैसे डिस्काउंट रिसीव्ड? कैसे पता चला डिस्काउंट रिसीव्ड? चेक कितने का था? पढ़ो वहां पे सब लोग। What was the amount of check? 3420 and the amount to be paid was 3420 3,500. and settlement of 3,500. So how much is discount received? 80 rupees. 80 rupees. Did you all get that? Pay attention, all of you. Off videos I'm throwing out now. Don't tell me now. Permanent waiting room पे नहीं, सीधा बाहर जाएगा. This is the last warning. More than 2 minutes, if I find your video, I will be out. Don't disturb me again and again now in between. Telling you very important, Sam, and you are doing such mischiefs. Nonsense. Listen again. When you received a check, you did not deposit. You just transferred it to someone. The endorsed check is always cash. तो आया हुआ check ने किसी और को forward कर दिया. तो आया तभी cash to sales, गया तो भी Komal to cash. So how will you write in the cash book? By Komal account. By Komal account in the cash column 3420. By Komal account in the cash column 3420. Endorsed check is always cash. Okay. This is check endorsed. Check endorsed. Okay. And what about that discount received? क्या करना है उसके लिए? You write a note because that will go in journal proper. So transaction on 18th. Transaction on 18th involves discount received, which will be recorded in journal proper. Which will be recorded in journal proper. Is that clear? Transaction on 18th involves discount received, that will be going in your journal proper. Then
तो अभी तक का सिचुएशन क्या हुआ है? प्रेमल कोमल का क्या सीन चालू है, समझ में आ रहा है आपको? प्रेमल से चेक आ गया सेल्स का, कोमल को एंडोर्स करके सेटल कर दिया. At this point of time, tell me, think and tell me, are we supposed to receive anything from Premal, or are we supposed to pay anything to Komal as of now at this point of time? No. Think. Nothing. Nothing. क्योंकि सेल्स का पैसा आ गया और हमने कोमल को सेटलमेंट में दे दिया. कोमल must have been a creditor, so we settled her. So as of now, nothing doing. Both the parties are settled. Okay, come to the next one. Bank has sent an intimation stating that. अभी देखो, बैंक ने इंटीमेशन भेजा है, मतलब दैट गिव्स यू अ हिंट. व्हाट इज द हिंट? There What is is some the hint? transaction happening directly within the bank. Exactly. These transactions are happening directly through the bank. So Kirtana, can you tell me what will be the first part? Mr. Bimal, a customer, directly deposited 1500 into the bank. What entry you will pass? It will be bank to Mr. Bimal. Perfect. So bank to Mr. Bimal. So how will you write in the cash book? To Mr. Bimal account. which column? Bank. Bank column. This is your direct deposit on 21st September. Then the bank has debited the account with 45 being bank charges. Palak, what are bank charges for us? Expense. Expense. So what entry will pass for bank charges? Bank charges to bank. Bank charges to bank. So यहाँ पे क्या posting होगा? By bank charges. By bank charges account, bank column 45 rupees. Okay. Both the transactions are done through bank. Both the transactions are done through bank. Next one, receive the following checks and deposited them on the same day. That is a big hint. Isha, receive the following checks and deposited on the same day. इसका मतलब क्या हुआ? Which account should come? Cash or bank for these? Bank account. उसमें मुझे एंट्री बताओ. पहला वाला 500 for interest on debentures. क्या करोगे एंट्री इसका? Bank to interest on debentures. Perfect. Interest on debentures क्या है अपने लिए? Income है. What are debentures? Investments. Okay, you can invest your money in shares, debentures, bonds, FDs. So you get interest on that. Interest is your income. So bank to interest on debenture account. Bank column obviously 500 rupees. This is interest received. This is interest received. 2,500 for sale of old machinery. Smith Shah, 2,500 for sale of old machine. Smith, what do you think? What should be the entry? Sale of old machine का check आया है. Smith. Smith, are you there? Okay. Ruchi, can you tell me what will be the entry for sale of old machine? Yes, bank account debit to old machinery account. Very good. Simply machine is fine. Okay. Old, new, कुछ भी हो. Bank account debit to machinery account. Bank column 2,500. Okay. Machine गया पैसा आया. Machine गया पैसा आया. Perfect. Then 26th, withdrew from bank for office use 500 and personal use 150. Rutwa, what should be the entry for withdrawn from bank for office use? Cash to bank. Okay, it's a contra entry. So how will you post it? On the debit side to bank and on the credit side by cash. Okay, to bank, which column? Cash column. Cash column. To bank, cash column, and buy cash in the bank column 1,000. Sir, it's 500. 1,000 in, oh sorry, 500. Amount is 500. Bank to cash, cash to bank 500. That is cash withdrawn for office use. What about the cash withdrawn for personal use, Rutwa? What should be the entry for that? By drawings account. By drawings account. Perfectly Bank right. column. Bank column. Okay, bank से withdraw किया कितना? 150. By drawings account, bank column 150. Absolutely right. Bolo. Any doubts till this point, anyone?
If you got that. The last entry, again very important one. This is analysis का थोड़ा part है, ये दिमाग लगाने वाला एंट्री है. ये एंट्री चेंज करते रहेंगे हर एक सम के एंड में. कल हमने किया था एग्जांपल लास्ट लेक्चर में, एक्सेस कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक. ऑफिस में ज्यादा कैश नहीं रखना है तो बैंक में डाल दिया. वैसा ही यहाँ पर भी एक कंडीशन दिया हुआ है. सी व्हाट इज द कंडीशन. Retained rupees 1000 as cash in hand and transferred the excess amount to savings account, and also retaining 1500 as bank balance, transferred the excess sum to savings account. First, try to interpret the meaning. What is the meaning of the last part? Did you get it? The bank balance and cash balance is 1500 and 1000 respectively, and the amount is drawings basically. This drawings, yes, perfect. That is drawings account. Perfect. Why drawings? Why drawings? Did you all get that? Because owner business has current account only, not saving. Not savings account. Savings account मतलब personal account हो गया. Okay. तो what are we doing basically? हम सोच रहे हैं कि हमारे बिजनेस में कितना कैश है. जो भी कैश है ना, सबका सब मत रखो, उसमें से कितना रखो? 1000. Just keep 1000 with you in the business, and excess cash you transfer it to savings. Now, how will you find out how much excess cash you are having? How will you do that? How will you come Total of to debit know how much minus cash you are having? credit and minus the amount that is Debit. given. Absolutely right. Of what? Cash. Cash का debit minus credit करो पहले. So just tell me the debit total of cash if anyone has done it. Debit total of cash 1,500. 11,920. 11,900. $670. 13750 is bank total. No. I'm asking you about cash का debit minus credit. Where are you on bank? This working note I'm making. Check यहाँ पे. Cash का debit minus credit करो. Cash का debit minus credit. So Bank. can you show the debit side of bank once? अरे बैंक नहीं, कैश का करो पहले. कैश अरे का. पर डेबिट साइड बताओ ना, सिर्फ एक बार अमाउंट. अच्छा, अमाउंट. कैश का देखो पहले, डेबिट माइनस क्रेडिट कितना आ रहा है. कैश का डेबिट माइनस. 5250. कैश का डेबिट माइनस क्रेडिट. कैलकुलेट. 5250 यू आर गेटिंग. 5250. Yes. Calculate cash का debit minus credit. 5250. 11,920 minus 6670 is 5250. Okay, that is the balance. But are we supposed to keep this much? No. So required. How much is required in cash? Only 1,000. Keep only 1,000 rupees of Gandhi Bapu in the business. Rest of the Gandhi Bapu, take it home. Take it home मतलब savings. What entry you will pass? 4250 के लिए. 4250 drawings to cash ना. So buy drawings. Drawings to cash होता है ना entry. So buy drawings account cash column 4250. Buy drawings account cash column 4250. So instead of giving you the transaction directly भी दे सकते थे ना वो लोग सम में. You withdrew 4250 for personal use. You withdrew 4250 for personal use. So entry is drawings to cash. Directly भी दे सकते थे. Directly देने के बदले थोड़ा घुमा के दिया. वो लोग ने बोला कि 4250 नहीं, 4250 नहीं. You find out. डेबिट माइनस क्रेडिट ऑफ कैश करो, उसमें से 1000 रखो, उसके ऊपर जितना है वो डाल दो घर पे सेविंग्स अकाउंट. ओके, तो एंट्री तो बहुत सिंपल है. ड्रॉइंग्स टू कैश सेविंग्स में डाला है इसके लिए. बट अमाउंट इज इंपॉर्टेंट. अमाउंट ढूंढना इज इंपॉर्टेंट. अमाउंट समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है सबको? ये तो हुआ कैश का पार्ट. नाउ व्हाट यू विल डू विद बैंक? Same thing you will do with bank. So get the debit total of bank. Do debit minus credit of bank. 15,250. Debit total is 15,250. What is the credit total of bank? 9920. Is that right? 9920 is the credit of bank. What do you mean by this debit minus credit? Are you getting it? Receipt minus payment I am doing. डेबिट मतलब रिसीट, क्रेडिट मतलब पेमेंट. इतना पैसा आया, इतना पैसा गया. कैश का भी इतना पैसा आया, इतना पैसा गया. तो बचा कितना? व्हाट इज द बैलेंस एट बैंक?
With the balance at bank. 53 6. So I'm getting bank total as 13,750. Bank total is right or wrong? Check. So drawings would be 3830. Can you tell me the balance first? Debit minus credit. Debit minus credit. 5330. 5330. Is that right? 5330. Please cross verify. Others also. Less required. 5330 is the balance. Are we supposed to keep 5330? No. Required is only 1500. So 4830. 3830 goes to savings. Goes to savings. Okay. Goes to savings account. So what entry you pass for this 3830? What entry will you pass for this 3830? Drawings to bank. So bank में जाएगा by drawings 3830. 3830 bank में by drawings. Understood? Is that clear? Okay. No, sir. नहीं समझा? Sir, what you got the credit total? 9920. Total you didn't get or entry you did not understand? What you didn't get? No, total. Total. Totals देख लो. That is plus minus. Smith Shah, are you understanding? Smith Shah, are you there? Network ही गया. Yes, sir. Are you there? Yes, sir. Why is your video getting switched off again and again? Sir, the Wi-Fi is not proper. 3830 का क्या एंट्री होगा बताओ मेरे को. 3830 का व्हाट एंट्री यू विल पास? By drawings only. By drawings. सेम इन द बैंक कॉलम. ओके, हमने कैश कॉलम में लिख दिया, अभी बैंक कॉलम. अभी वापस बैलेंस करो लास्ट में डेबिट माइनस क्रेडिट. ओके, तो इज देयर एनी चेंज इन द टोटल्स ऑफ कैश एंड बैंक? आई थिंक टोटल्स आर In सेम. right, by balance the amounts that are given 1000 and 1500 and Correct. then बैलेंस विल बी हाउ मच? ये पहले टोटल लिख लो 11920 कैश में और बैंक में लिख दो 15,250. 15,250. डेबिट इज ग्रेटर एंड बैलेंस वापस करने की जरूरत नहीं है. अपने आप यू विल गेट हाउ मच? 1000 इन कैश एंड 1500 इन बैंक. डिड यू गेट इट? क्योंकि आपने रखा ही उतना है, उसके ऊपर का तो डाल दिया आपने, घर पे ट्रांसफर कर दिया बाय ड्रॉइंग्स करके. सो आपके पास अभी पैसे ही कैश में कितने हैं? 1000 और बैंक में है 1500. दैट्स व्हाट वाज द कंडीशन. दैट वाज द कंडीशन दैट दे टोल्ड अस. ओके, इतना कैश रखो, इतना बैंक रखो, बाकी डाल दो घर पे. तो ये बाय बैलेंस बन जाएगा नेक्स्ट मंथ में. टू बैलेंस बीडी 1000 and 1500. 1000 and 1500. That's it. That completes the problem. Okay. समझाइए. Next one. 19th sum. Come to sum number 19. Draw the column for 19th sum. Are you getting the totals and the balance? प्लस माइनस में गड़बड़ मत करना. बी स्ट्रॉन्ग विथ मैथ्स, थोड़ा अरिथमेटिक. कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है अभी. सब कुछ राइट होगा और ये रॉन्ग हो जाएगा, नहीं तो फोकट का. सम नंबर 19. In the cash book of Mr. A. The cash book of Mr. A.
Debit minus credit, debit and credit. Cash, bank, date, payments, V and O left, cash and bank. Let's begin the first one, cash and bank balance, 1200 and 5500. Okay, so I think both are debit balance. So it should be on 1/1/11/10 was November 10. To balance BD. To balance BD, cash it is 1200 and bank it is 5500. So these are the opening balance. Both are debit balance, normal balance. Correct. Next one. Megha sold goods to Z for rupees 5000 and received cash 1500 and for the balance a crossed check of. So it's partly cash and partly on bank. Okay. So to sales account in cash column you will write 1500 and in bank column you will write 3500. 3500. Total sales are of 5000. जिसमें से 1500 you are receiving in cash and 3500 by check, cross check. Cross check is always bank. No two thoughts about that. Okay. The cross check will be bank. No need to worry with that. Cross check will be bank. So two sales in the cash column and in the bank column, 1500 and 3500. Is that clear? This is happening on 1st of November. Same line you can write both the amounts. Then received on account the following checks which were deposited on the same day. Isha received the following checks which were deposited on the same day. Which account will be using? Bank. Bank. First one from Raja, 1500 in full settlement of 1550. Entry क्या बनेगी ईशा? Bank discount allowed to Raja. तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको कैश बुक में? By Raja. By Raja. To Raja. Come on. Bank to Raja. So to Raja in the bank column because the check is deposited on the same day. How much amount? What amount you'll write? 1500 or 1550? 1500. 1500. What about that 50 rupees? What is that? Note. What is that? Discount allowed or discount received? Discount allowed. Discount allowed. So go to that note number 1, write down transaction on 2nd involves discount allowed, which will be recorded in journal proper. Okay, journal proper. I think a common note will be there for A, B and C. A, B, C तीनों के लिए common note है. इधर आप लिख सकते हो second A, B, C. Second A, B, C. All three are having common note of discount allowed. Next one. I think same entry will pass. आगे भी दिया हुआ 4456. Even the amounts are same, discount amount. Amounts are also same.
but we don't write that amount, right, in the note. So 4450 in full settlement of 4,500 from Ravi, and 815 full settlement of 900 from Jack. I think the entry should be same. To Ravi in the bank column 4450, and to Jack in the bank column 850. All the three people were our debtors. They are all giving us the monies. So bank to Raja, bank to Ravi, bank to Jack. Ravi should be 4500, right? Ravi should be how 4500? It is given that rupees 4450 in full settlement of no. 4450 in full settlement of 4,500. So 50 rupees is discount. And 815 full settlement of 900. So 50 rupees is discount. So all three were our debtors. All three gave us the check. All the three checks deposited on the bank on the same day. Sabka entry same. Sab mein discount allowed. All discount allowed went in the notes. All discount allowed went in the notes. Is that clear? समझा ये वाला सबको? नेक्स्ट वन डी वाला है ना, वो इसका अलग ट्रांजैक्शन है, वो रिसीव नहीं है, वो पेड चेक है. ए बी सी आर सेकेंड वाले का, डी वाला अलग ही है, हैपनिंग ऑन सेकेंड, बट इट्स अ डिफरेंट ट्रांजैक्शन. इट इज नॉट रिसीव्ड, इट इज पेड. अमाउंट इज पेड. डी वाला सेपरेट है. Purchased goods worth 3,000 from Messrs. Bombay Stores and paid half the amount by issuing a check. Jainam Shah, how is the transaction? Is it cash credit or partly cash, partly credit? Jainam? It's partly. Partly cash, partly credit. So what will be the journal entry for that part? वो बॉम्बे स्टोर्स वाले का एंट्री क्या होगा पहले? Purchase account debit to bank account. यहाँ पर वो ही जाएगा. And what about the credit part? Purchase account debit to Bombay Stores. और वो कौन से बुक में जाना चाहिए? Purchase to Bombay Stores. Journal document. हाँ. Purchase book. Purchase. हाँ, घाई में देखो सब जर्नल प्रॉपर ही लिख देंगे नोट्स में. ये परचेज टू बॉम्बे स्टोर्स है, दैट इज अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, सो दैट विल गो इन परचेज बुक. एंड जो कैश परचेज है वो यहाँ पे आ जाएगा कैश बुक में, बाय परचेज अकाउंट. विच कॉलम जैनम? Sir, in debit side, credit side. क्रेडिट साइड. विच कॉलम? कॉलम कैश या बैंक? Bank. बैंक कॉलम. डेट इज सेकेंड. बैंक कॉलम क्योंकि आपने चेक दिया. सबको समझ आई ये एंट्री? एनी डाउट? क्या हुआ समझा? परचेज टू बैंक टू बॉम्बे स्टोर्स. तो पार्टली कैश, पार्टली क्रेडिट. Credit component will go in the note. Transaction on second involves credit purchase of goods, which will be recorded in which book? कौन से book में जाएगा? Which will be recorded in कौन सा book? Purchase book. Purchase book. Don't write journal proper blindly, okay? There might be some credit purchase or sales also involved. Eighth one, issued the following checks. यहाँ पर ही देख के hint मिल जाता है. Issued the following checks. Virali, what do you think? Issued the following checks means what? पैसा आया कि गया? गया. So to BMC against municipal taxes 850 rupees. What will be your entry? By tax. Bank to tax. By taxes. Perfect. Taxes to bank. By Tax taxes. Which column? Bank. Bank column. Why not BMC? It is our expense. Expense. Absolutely right. For Mr. A's son's school fees 125. Vidushi, what do you think? By drawings account. Absolutely right. By drawings, because we are only Mr. A, हमारा ही बच्चे का fees है, so it is drawings. So 125 in the bank column. That is 125 in the bank column. 8th of November. To Godrej against purchase of furniture 1800 rupees. Forum Nathani.
to Godrej against purchase of furniture 1800. What entry you pass? Furniture to bank. So यहाँ पे क्या लिखना है? Buy furniture. Furniture, not by Godrej. Okay, not by Godrej. Is that clear? दियांशी को समझाइए. Not by Godrej. Jia Savla, sorry. Jia Savla, did you understand? Buy furniture, immediate purchase of asset, and payment is made by check. Buy furniture in the bank column 1800. Next one. All the three checks were issued, मतलब पैसा गया. बढ़ो आगे. 10th one. The bank informed us that Jack's check has been returned dishonored. Jack was informed and he paid immediately cash for the amount, retaining the benefit of discount. जो payment तो बाद में देखते हैं. पहले तो bank informed that Jack's check is dishonored. Moksh, what would be the dishonor entry for Jack's check? सर जैक है ना, टू जैक तो जैक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू ये बैंक Discount allowed, discount received debit to bank. Perfect, yes. बैंक अकाउंट. हाँ, तो यहाँ पे कैसे पोस्ट करना है? बाय जैक अकाउंट. बाय जैक. ओके, टू जैक का हो जाएगा बाय जैक. करेक्ट और है. रिवर्सल डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट रिसीव नहीं है, डिस्काउंट अलाउड का रिवर्सल होगा यहाँ पे. ओके, पहले जब भी चेक आया था तभी क्या एंट्री मारा होगा? बैंक डिस्काउंट अलाउड टू जैक. अलाउड, हाँ, डिस्काउंट अलाउड. हाँ, तो अभी क्या मारोगे उल्टा? जैक टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड. जैक टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड. सो बाय जैक बैंक कॉलम की कैश कॉलम? Bank column. Buy Jack in the bank column. Remember the four rules of dishonor: opposite side party's name, reverse the discount, and same column. Same column मतलब bank column क्योंकि बैंक में था check, deposited था. तो यहाँ पे तो आ जाएगा buy Jack. This is check, dishonored, check, dishonored on 10th. What about discount allowed का reversal, Moksh? Journal proper. Transaction on 10th involves reversal of discount allowed, which will be recorded in JP. Discount allowed to Jack का हो जाएगा Jack to discount allowed. That's reversal. Okay, that will go in note. वो खत्म नहीं हुआ है, उसके आगे भी पढ़ो क्या दिया है. Jack was informed and he immediately paid us cash, retaining the benefit of discount. Now what do you mean by this? ये वापस क्यों पैसे दे रहा है Jack? पहले तो दे दिए थे उसने. For pending amount, like he still a debtor for that amount. Why is he a debtor? You got it? Why is he a debtor? Because the check has been dishonored. Because the check has been dishonored. Okay. पहले जैक ने अपने को पैसा दिया चेक में, वो चेक तो बाउंस हो गया. अभी वापस अपने को जैक से लेना है. अभी आइडियली लेना कितना था जैक से? 900 लेना था. Did you all understand that? 900 रुपीज ही लेना था फुल अमाउंट. लेकिन हम तो हरीशचंद्र हैं, हम बड़े दिल के अच्छे हैं. क्या हमने वापस डिस्काउंट अलाउ किया है? Yes, sir. Yes, because in the statement they have given, he settled immediately by giving cash, retaining the benefit of discount. हमने वापस डिस्काउंट अलाउ किया. Okay, because he might be paying us within the permissible time limit. That's why we have allowed it. Okay, but अगर उधर ऐसा दिया होता, Jack paid us the necessary amount in cash. बस इतना सा. Jack paid us the necessary amount in cash. तो फिर we would have received how much? 900 पूरा. फिर कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं करना है. Are you getting that? यशवी. ओके, पूरा का पूरा 900 वसूल लेने का. ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई करके दिया रिटेनिंग द बेनिफिट, तो ही डिस्काउंट अलाउ करना आप लोग. ठीक है, तो
वापस एंट्री क्या करेंगे, वापस पैसा आया जैक से, वापस you got the money from Jack, now he is paying in cash, so what entry will pass, tell me? To Jack account. Jack, which column? But in cash column. Cash column, but in Because he is cash. paying us cash. Okay, ये इधर चाहिए तो शॉर्ट में लिख दो, पहले था चेक रिसीव, नहीं तो जैक जैक में कंफ्यूज हो जाओगे, फिर चेक डिसऑनर्ड और फिर कैश रिसीव, चेक रिसीव, चेक डिसऑनर्ड, फिर कैश रिसीव. दिस इज ऑन. Sir, if Jack wouldn't have paid us on 10th again, तो वो dishonor का buy Jack उधर ही ऐसे ही रहता ना, we वैसे ही wouldn't do रहेगा, anything. फिर wouldn't do it, फिर वो डिसऑनर ही रह जाता, फिर जब भी आगे पैसा आया तभी एंट्री करना, अदरवाइज डिसऑनर का एंट्री करके छोड़ देना, लीव दैट. ओके, डिस्काउंट का नोट आ जाएगा, ट्रांजैक्शन ऑन 10th also involves fresh discount. Okay, involves discount allowed which will be recorded in journal proper. वापस हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, so that will go in journal proper. ओके, 10th के बाद वो 11th है, एक्चुअली 9th गलती से हो गया, 10th के बाद 11th है. Debtor Miss Sita directly deposited into our bank 5,500 which were due from her. Palak, what will be the entry for Sita directly putting the money in the bank? Bank to Sita. Bank to Sita. So to Sita account in the bank column. To Sita account in the bank column 5,500. बैंक में डायरेक्टली पैसा आया. This is on 11, 10. 9th नहीं है, 11th है. Then Jia Shah, tell me, bank informed us that check issued to Godrej stands dishonored since the amount in words and figures default. Godrej वाला check bounce हो गया. What should be my entry? To Godrej account. Very good. Why not to furniture? Party's name should be Party's included. name. देखो गोदरेज को कौन सा चेक दिया था, सब लोग पढ़ो. 8th of November को था गोदरेज, दिखा 1800 का चेक दिया था, तभी तो मैंने क्या एंट्री किया था, फर्नीचर टू बैंक. फर्नीचर खरीदा, चेक दिया, अब वो चेक बाउंस हो गया, तो शुड आई डू बैंक टू फर्नीचर? No, that will be wrong. I cannot write bank to furniture. Are you all getting Debtor's that? name has to be there. If I write bank to furniture, it will amount to sale of furniture. Am I selling that furniture back to Godrej or someone? No, I'm not selling. Furniture तो आ चुका है. अभी क्या सीन हुआ, मेरा गलती था ना, तो I have to pay to Godrej. तो Godrej is my creditor. तो bank to furniture नहीं आएगा, bank to Godrej आएगा. Entry will be bank to Godrej. तो इसीलिए वो रूल दिया हुआ है, ऑपोजिट साइड बाय का टू, पार्टीज नेम, सो टू गोदरेज, एंट्री विल बी बैंक टू गोदरेज. व्हिच कॉलम नाउ, दैट मेक्स इट वेरी बैंक क्लियर टू अस, दैट इज बैंक कॉलम. ओके, ये चेक बैंक में था तो बैंक कॉलम 1800 रिवर्स कर दो. याद है एग्जांपल लास्ट लेक्चर भी किया था, वो रेंट वाला, वी रिसीव्ड रेंट, द रेंट टू बैंक, बट व्हेन इट गॉट डिसऑनर्ड वी डिड नॉट पास बैंक टू रेंट, we passed bank to debtor. वो आया हुआ चेक था, इसलिए बैंक टू डेटर, तो इधर बैंक में टू डेटर पास किया था, नहीं सॉरी, आया हुआ चेक था, बैंक टू रेंट था, रेंट मिला था अपने को, बैंक टू रेंट, एंड दैट गॉट बाउंस. तो रेंट टू बैंक नहीं किया था, डेटर टू बैंक किया था. बैंक में बाय डेटर, बैंक में बाय डेटर वी हैड रिकॉर्ड. ओके, so hamesha dishonor entry will have party's name. Dishonor entry will have party's name, keep that in mind. Was there any discount with Godrej? Was there any discount with Godrej? Check. If there was any discount, what will you do? No discount. अगर होता तो Reversal entry. Reversal entry. No, Reversal for journal discount. proper. Okay, that will go in journal proper. That will go in journal proper. Okay. So this is on 13. अब मुझे बताओ गोदरेज का क्या सीन है, गोदरेज से पैसा लेना है कि गोदरेज को पैसा देना है? We owe him 1800.
हमें पैसा देना है ना गोदरेज को, हमने फर्नीचर खरीदा, पैसा दिया था, वो बाउंस हो गया, तो अभी वापस अपने को देना है। कितना पैसा देना बाकी है गोदरेज को? 1800. 1800. ओके, कीप दैट इन माइंड। अभी नेक्स्ट टाइम जब हम उसको पे करेंगे तो टू बाय गोदरेज आएगा कि बाय फर्नीचर? हाँ, नाउ यू थिंक अभी क्या आएगा, बाय गोदरेज की बाय फर्नीचर जब हम पे करेंगे? बाय गोदरेज By फर्नीचर Godrej. गोदरेज, बाय गोदरेज। वापस थोड़ी फर्नीचर तो आ चुका है। तुमने क्या किया है, देखो मैं एंट्री के फॉर्म में बताता हूँ। जब फर्नीचर खरीदा था ना, तब ये एंट्री किया, फर्नीचर टू बैंक 1800। फिर ये चेक बाउंस हो गया, तो रिवर्सल एंट्री क्या मारा है हमने, बैंक टू गोदरेज, नॉट फर्नीचर टू गोदरेज। वी हैव पास बैंक टू गोदरेज। अब क्या हुआ, ये कट हो गया, बैंक बैंक कट। इट्स लाइक वी हैव बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अभी गोदरेज को पैसा देना बाकी है, तो व्हेन वी पे विल पास एन एंट्री गोदरेज टू बैंक, गोदरेज टू बैंक 1800. So now Godrej gets settled and we are left with furniture to bank at the end once we settle Godrej then. Okay? अभी वापस जब पे करोगे तब you won't write furniture to bank. Now you will pay whom? Now you will pay Godrej. तो Godrej to bank. डिसऑनर के बाद हमेशा पार्टी से ही पैसा आएगा, आइदर बैंक टू डेटर या डेटर क्रेडिटर टू बैंक, हमेशा पार्टी सेटल होगा आफ्टर डिसऑनर। इज दिस क्लियर? एसेट वैसेट एक्सपेंस तो हो चुका है पहले, उसको वापस करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अभी रिसीव्ड कैश 550 फ्रॉम Z अगेंस्ट अमाउंट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड। यशवी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द एंट्री? Amount previously written off as bad, now recovered. Yashvi is freezed. Yashvi. Acha. Priyal, come on, tell me, what entry will you pass? To bad debts recovery account. Very good. To bad debts recovery account. To bad debts recovery account. Which column? Cash column 550. Cash column 550. Absolutely right. Cash column 550. This is on 15. Okay, 15 there. Then, since fixed deposits of 10,000 had matured, the amount was transferred to the current account. Since the fixed deposits had matured, the amount was transferred to the current account. What are fixed deposits for a business? Assets. They are investments basically. Okay. फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हुआ और करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो एंट्री क्या बनना चाहिए आपका? थिंक कैश टू कैपिटल, To fixed deposits. बैंक टू कैपिटल. Why capital? Who told it is personal fixed deposit? Who said it is personal? Fixed deposit किसका होता है, कुछ नहीं दिया है तो? बिजनेस अकाउंट बिजनेस का होता है। पर्सनल का एक ही अकाउंट होता है, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो। कौन सा होता है पर्सनल वाला? Which account you have in personal? Savings. LIC. Savings and LIC वो सब पर्सनल, बट अकाउंट, बैंक अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट पर्सनल होता है, करंट अकाउंट बिजनेस का होता है, एफडी अकाउंट भी बिजनेस का होता है अगर कुछ नहीं दिया है तो। ओके, तो फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर्ड का मतलब क्या, एफडी का टाइम आ गया तो एफडी तोड़ दिया, बंद किया एफडी, एंड अमाउंट वाज ट्रांसफर्ड टू करंट। So what entry will you pass for that? Bank, can we treat that as cash and then? No, they have given now, you have transferred it to current account. Bank to invest. Is directly increase ना, मतलब डायरेक्ट कैपिटल ही आ रहा है, पर उसको कैपिटल में कुछ और बोलेंगे। कैपिटल क्यों आएगा? कैपिटल इसलिए क्योंकि ऐसा अमाउंट आ रहा है, बट इट इज नॉट कैपिटल, इट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कैपिटल नहीं है वो। कैपिटल कभी आएगा? व्हेन यू यूज द टर्म कैपिटल, व्हेन ओनर ब्रिंग्स इन। हाँ, तो दिस इज नॉट ब्रॉट बाय द ओनर इन द बिजनेस। बिजनेस का है ना पर्सनल, सॉरी, ओनर का पर्सनल पैसा बिजनेस में नहीं आ रहा है, बिजनेस का ही एसेट है वो। सी, व्हेन यू सेल अ फर्नीचर and you get the money and you put it in the bank, what is the entry? Bank to furniture.
When you Yes. sell shares and you put the money in the bank, what is the entry? To Bank to investment in shares. shares. वैसे ये इन्वेस्टमेंट है, एफडी इज एन अच्छा, to इन्वेस्टमेंट. fixed deposit account. हाँ, तो बैंक टू फिक्स डिपॉजिट. इट्स लाइक यू आर सेलिंग एन एफडी. You are selling an FD. FD is like an asset for the business. Okay. So when you transfer the money to current, it is bank to FD. Got it? FD एक asset है, asset बेचा पैसा आया, तो bank to FD. So to FD लिखो तो भी चलेगा, या to investment in FD लिखो. Bank to investment in FD. Bank to investment in FD 10,000. Did you get it? अगर ऐसा दिया होता कि पर्सनल फिक्स डिपॉजिट मैच्योर्ड एंड द अमाउंट वाज ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट, पर्सनल फिक्स डिपॉजिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, तो क्या एंट्री होता? टू कैपिटल अकाउंट. तो फिर टू कैपिटल आता. तो फिर टू कैपिटल वाज राइट. सर ये बैंक में जाएगा ना? सर बैंक में जाएगा यार. द अमाउंट विल गो इन बैंक कॉलम. अमाउंट विल गो इन बैंक कॉलम. बैंक टू इन्वेस्टमेंट इन एफडी. गॉट इट? समझा? ये वाला एफडी वाला समझो. द अमाउंट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट टू एफडी. समझो, द अमाउंट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट टू एफडी. करंट टू एफडी का मतलब क्या है? बाय इन्वेस्टमेंट इन एफडी. हाँ, बाय इन्वेस्टमेंट इन एफडी. मतलब यू आर बाइंग इन्वेस्टमेंट, बाय यू आर बाइंग एफडी. तो इन्वेस्टमेंट इन एफडी टू बैंक, इन्वेस्टमेंट इन एफडी टू बैंक. डिड यू ऑल गेट दैट? दोनों का एंट्री का मतलब समझा? ध्यान से सुनो सब लोग. एफडी टू करंट का मतलब क्या है? एफडी टू करंट मतलब क्या? एफडी खरीदा कि एफडी बेचा? एफडी टू करंट का मतलब एफडी बेचा. एफडी बेचा. तो बैंक टू एफडी, बैंक में पैसा आया, एफडी बेचा. एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट टू एफडी. करंट टू एफडी का मतलब एफडी खरीदा. तो इन्वेस्टमेंट इन एफडी टू बैंक. इज दैट क्लियर? गॉट इट ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट वन. बढ़ते हैं आगे. issued a fresh check to the Godrej for the amount due. कहाँ से टपका ये गोदरेज? एंट्री ऑन 30. एक डिसऑनर हुआ था. हाँ, तो गोदरेज को पैसा देना था कि लेना था? क्रेडिटर. देना. हाँ, तो अभी दे रहे हो. कितना दोगे पैसा? अमाउंट तो दिया नहीं है वहां पे. चेक करो ऊपर से. 1800. 1800. और एंट्री क्या करोगे उसका? फर्नीचर टू बैंक या गोदरेज टू बैंक? बाय Godrej to bank. गोदरेज टू बैंक. तो बाय गोदरेज इन द बैंक कॉलम 1800. ये हुआ गोदरेज सेटल्ड. गोदरेज सेटल्ड. यहाँ पे गोदरेज का कहानी खत्म. गोदरेज का कहानी खत्म. गोदरेज का स्टोरी समझा सबको? चेक दिया था, बाउंस हो गया, वापस दिया. बाउंस होने के बाद अभी वापस फर्नीचर टू बैंक नहीं आएगा, गोदरेज टू बैंक आएगा. सेटलिंग गोदरेज. issued a check of rupees 250 against petty cash account. Now petty cash book में हम ये डिटेल में लर्न करेंगे आगे. ठीक है? petty cash book का पूरा चैप्टर बाकी है. तो petty cash क्या होता है? petty cash याद है आपको? petty cash book एक सब्सिडरी बुक होता है. petty cash account एक छोटा सा कैश अकाउंट होता है. तो petty cash का यूज क्या होता है? The seventh subsidiary book. What is the use of petty cash? Remember? What do we record in that? So the small general expenses like the sweeping ka charges. Yes. And that. Small expenses. Okay, cleaning, sweeping, subscription, gifts, charity, donation, small expenses. उसके लिए होता है petty cash book. Okay, तो petty cash का mechanism कैसे चलता है? There is a cash book and there is a petty cash book. Cash book is maintained for big kharchas, big amounts of cash transaction, and petty cash book is maintained for small value cash transaction. Okay, तो petty cash में क्या होता है? कभी भी कोई भी बिजनेस का ये ट्रेंड रहता है कि छोटा वैल्यू का है ना, एक्सपेंसेस बहुत सारा होता है किसी भी बिजनेस में. नंबर ऑफ एक्सपेंसेस आर अ लॉट. तो छोटे छोटे वैल्यू का बहुत सारा खर्चा होता है, बट छोटे अमाउंट का रिसीट्स बहुत कम होता है. तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जो बंदा पेटी कैश बुक मेंटेन कर रहा है उसको बोलते हैं पेटी कैशियर. तो जो पेटी कैशियर होता है, जो पेटी कैश बुक मेंटेन कर रहा है, उसको खर्चा तो बहुत सारा है, छोटे छोटे अमाउंट का बहुत सारा खर्चा पे करना है, बट उसके पास छोटे अमाउंट का पैसा आएगा नहीं.
क्योंकि छोटे अमाउंट का रिसीट्स बहुत कम होता है बिजनेस में, स्क्रैप होता है बहुत, या फिर सेल ऑफ न्यूज़पेपर, थोड़ा बहुत कटलरी क्रॉकरी बेच के आया, भंगार बेच के आया, वो ही रहेगा। तो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप खर्चा कैसे करोगे ना, ये दिक्कत हो जाती है। कैश बुक में ये प्रॉब्लम नहीं होता है। कैश बुक जो मेंटेन करता है ना, दैट गाय इज कॉल्ड एज चीफ कैशियर और मेन कैशियर। तो मेन कैशियर हैंडल्स द कैश बुक एंड पेटी कैशियर हैंडल्स द पेटी कैश बुक। तो जो मेन कैशियर होता है ना, वो तो राजा है एकदम, उसको कोई टेंशन नहीं है। उसके पास बड़े अमाउंट का रिसीट्स भी बहुत है और बड़े अमाउंट का पेमेंट्स भी बहुत है, पैसा आ रहा है जा रहा है, नो टेंशन। बट पेटी कैशियर बेचारा दुविधा में रहता है। उसके पास छोटे छोटे अमाउंट का पेमेंट्स बहुत सारा पे करना है, जैसे कि समझो महीने का उसको 5,000 रुपया पे करना है, छोटा 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 अमाउंट, लेकिन छोटा अमाउंट का रिसीट खाली 500 रुपए का है, 500 रुपीज का छोटा रिसीट, वो 500 रुपए से 5,000 रुपया कैसे पे करेगा? So in order to tackle that situation, what do we do? Any business, this is a general trend. In any business, what do we do? We transfer some amount from the cash book to the petty cash. Basically, cash को कम करते हैं और petty cash को बढ़ा देते हैं. Both are assets. Cash is also asset. Petty cash is also asset. तो cash में से निकाल के थोड़ा पैसा petty cash में transfer कर देते हैं, so that he gets enough of money to pay off his monthly expenses. Got it? So this is the logic behind petty cash book. Petty cash में छोटा expenses बहुत सारा होता है, छोटा receipts बहुत कम होता है, तो उसके पास पैसा नहीं है ना, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो हम लोग क्या करते हैं, जो मेन कैशियर होता है उसको बोलते हैं भाई इसको हर महीने पैसा दे। तो मेन कैशियर क्या करेगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में से कम करेगा और वो पैसा डाल देगा पेटी कैश अकाउंट। ओके, सो इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस एंट्री, वेरी सिंपल। पेटी कैश अकाउंट क्या है? इट इज एन एसेट। कैश अकाउंट क्या है? इट इज एन एसेट। ओके, so when you transfer the money from cash to petty cash, what will happen? Cash will decrease and petty cash will increase. So यहाँ पर वही हो रहा है, यहाँ पर आप कैश नहीं दे रहे हो, चेक दे रहे हो, तो basically bank will decrease and petty cash will increase. Bank balance will decrease and petty cash will increase. Okay, so what should be the entry for that? Think about it. क्या होना चाहिए when you issue a check for petty cash? So it is like contra entry ना, कि बैंक से कम हुआ कैश में बढ़ा, कैश में बढ़ा तो बैंक से कम हुआ। हाँ, बट कॉन्ट्रा में कौन से दो अकाउंट होते हैं? कैश और बैंक। बैंक एंड कैश, तो इधर यहाँ पे कैश कौन एंड सा? पेटी कैश। यहाँ पे बैंक और पेटी कैश, बैंक और पेटी कैश। एंट्री क्या बनेगा इसका लेकिन? व्हाट बी द जर्नल एंट्री? बाय पेटी कैश अकाउंट। बाय पेटी कैश अकाउंट। जैसे कैश अकाउंट होता है ना, वैसे पेटी कैश अकाउंट होता है, छोटा कैश। तो इश्यूड अ चेक टुवर्ड्स पेटी कैश का मतलब समझा आपको? इधर 250 रुपीज मेन कैशियर ने बैंक में से निकाला और पेटी कैश में ट्रांसफर कर दिया। अब वो 250 रुपीज से मंथली खर्चा पे करेगा पेटी कैश का। फिर उसके बाद मंथ एंड हो जाएगा, वापस नेक्स्ट मंथ मेन कैशियर विल गिव 250 रुपीज टू द पेटी कैश, वापस उससे खर्चा पे करेगा, वापस मंथ के एंड में न्यू मंथ के बिगिनिंग में पेटी कैशियर को 250 मिल जाएंगे। दिस इज व्हाट हैपेंस। सो एंट्री क्या बनेगा यहाँ पे? पेटी कैश टू बैंक या बैंक टू पेटी कैश? व्हाट डू यू थिंक? Petty cash to bank. What type of account is petty cash account? You got that? What type of account is petty cash? Real account. It is a small expense account, and to be specific, it's an asset just like cash. Small expense nahi. Small cash account. Small cash account. Petty asset cash is like cash only. Asset like cash only. Small cash account. It is utilized to pay small expenses. That cash is utilized to pay small expenses. Big cash is used to pay big expenses. Is that clear? So petty cash to bank, तो entry क्या होगा? By petty cash account. Which column? Which column? Bank column. Bank column. What if you would have given cash? What if you would have given cash? Then cash column. Cash column. तो cash कम हो रहा है और petty cash बढ़ रहा है। यहाँ पे बैंक कम हो रहा है और petty cash बढ़ रहा है। Got it? Petty cash asset बढ़ा तो डेबिट और बैंक asset घटा तो क्रेडिट। So this is on 28th. ये petty cash book में भी हम लोग डिटेल में लर्न करेंगे वापस। Next one is
Bank informed us that our account has been debited against bank charges of 25 rupees. What are bank charges? Expense. So entry क्या बनेगा? By bank charges account. By bank charges account, which column? Which column it should go in? Bank charges by bank only. Bank charges are always in bank. Okay. So by bank charges account, bank column. Next one, you know how to do that. All cash in excess of 1000 is deposited in the bank. याद आया? We have done it earlier twice. कैसे करने का याद आया? What will you do? How will you find out the amount पहले? What will you do in working note? Amount कैसे ढूंढना है? क्या करोगे? Debit minus credit of cash. पहले find out करो अपने पास कितना पैसा है. So do debit minus credit of cash. I think my cash का debit are 2700, 35, 4100. Cash का debit side is 4100. Is that right? Minus credit. Do you have any credits of cash? No, sir. No credits. Credits are 0. So what is the balance of cash? What is the balance of cash? 4100. Receipt minus payment. I think you are having 4100 in the business as of now. But do you want to give 4100? 1000. We'll keep 1000 and 3100 will be deposited. 3100 will be deposited with bank. What entry will you pass for that 3100 which you are depositing? Bank to cash. Bank to cash, which is a contra entry. So to cash, bank column, by bank, cash column. To cash, bank column, by bank, cash column. This is happening on 30th of November. And that's it. Now you balance it. Get the total of cash, which is still 4100. What is the balance of cash? What is the balance of cash? Balance कितना आएगा कैश में? 1000 ही आएगा क्योंकि आपने 1000 ही रखा है. बैंक का आपको ऐसा नहीं मिलेगा डायरेक्टली. बैंक का आपको करना पड़ेगा. Bank total is 36,200. I think debit side of bank is greater. So what is the total? 36,200. Is that right? 36,200 total of bank. Please check. Total of bank. And balance, I'm getting 29,000. Exact. Yes, sir. Check. Exact 29,000 should be the balance at bank. Please check. Is she right? Calculate. All of you calculate. 1, 12, 10. Yes. बराबर आ रहा है? Calculate करके check कर लो. ठीक है? That's your solution. Very important sums which we did today. All varieties, variations काफी सारे थे. Lengthy भी था. Sum number 16, sum number 19. Big sums. Next lecture again. More such problems with more difficulty. Endorse, check, dishonor, फिर settlement. Okay. For our complicated sums we are going to learn in the next lecture. Any other doubts till now? Anyone? जम रहा है अभी? होमवर्क समझा आपको? आज भी आ जाएगा एक होमवर्क. ओके. सबमिटेड. कल भी थोड़ा डिले हुआ था. मेजॉरिटी ऑफ यू सबमिटेड बट सम 10 people were still late yesterday. So see to it you submit on time. Okay. Before 6, before 7 o'clock. Day after tomorrow. Tomorrow, sorry. Not day after. So still if you have any doubts you wait. Otherwise you can leave. Tata bye bye. See you. Take care. Bye, sir. Bye, sir.